Okay, Assalamu alaikum students. So today we are going to start AS level physics, May June 2025, paper 1, variant 3. This is a 1 hour 15 minutes paper. You have some data points in the starting, and let's move on to the first question quickly. What represents a vector quantity? अच्छा, इन ऑप्शंस में से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? Obviously, it is quite evident कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? 1 न्यूटन ऑफ फोर्स एक्टिंग अपवर्ड. हमेशा फोर्सेस जो हैं क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटी. ओके. What is a reasonable estimate of the current in an electrical kettle that is in use? Always remember that usually जो हो appliances के currents होते हैं वो होते हैं from the ranges of 8 till 12 amperes. So is 8 ampere an option? Yes, C is your option. Which statement about errors in measurements is correct? कौन सा statement about errors is correct? An accurate set of measurements is always has a random error. No. A precise set of measurements always has a small systematic error. No. A random error can be reduced by taking averages. Yeah, that's a very correct statement. Random errors हमेशा averages से reduce किए जा सकते हैं. C is your answer. So the first three questions were very, very simple. A sample of material has a cross-sectional area A, length L. The temperature of the two sides is T1 and T2. Okay. The thermal energy Q is transferred through the sample in time t. These quantities are related by this equation where K is a constant. You have to state the SI base units of K. आपने SI base units of K निकालने. How will you do that? So first of all, this is your equation. Let's make K the subject. बेटा K को subject बना देते हैं. How? Q over T is equals to K into A into T1 minus T2 over L. Can you make this a small little k the subject? क्या आप k को subject बना सकते हो बेटा? जी बिल्कुल. Let's multiply L to the other side. Q into L divided by T. Area और change in temperature को नीचे ले आओ. T1 minus T2 is equals to your k. Now you have to calculate the SI base units of k. How will you do that? First of all, what is Q? Q is your energy. Q क्या है? Energy है. Thermal energy transfer. Do you remember the SI base units of Q? Energy के SI base units याद है बच्चों? Energy के SI base units क्या हुआ करते थे? kg m2 s minus 2. So replace it here. kg m2 s minus 2. What is L? L was the length. Length has the units of meters divided by T. T क्या है आपके पास? T is your time. टाइम के यूनिट्स क्या हो जाएंगे? सेकेंड्स. व्हाट इज ए? एरिया. एरिया के यूनिट्स क्या हो जाएंगे? मीटर स्क्वायर. चेंज इन टेम्परेचर T1 माइनस T2 यूनिट्स क्या हो जाएंगे? केल्विन के. कैन वी कैंसिल आउट एनीथिंग? यस. मीटर मीटर कैंसिल आउट. ओके. टेक सेकेंड टू द टॉप साइड. kg m2 s माइनस 3 m ऊपर आ जाएगा m माइनस 1 केल्विन माइनस 1. बेसिकली व्हाट आई हैव डन इज सेकंड को ऊपर लेके गया. सेकंड माइनस 1 हो गया. सेकंड माइनस 1. सेकंड माइनस 2. सेकंड माइनस 3 हो गया. मीटर को भी ऊपर लेके गया. मीटर माइनस 1 हो गया. केल्विन को भी ऊपर लेके गया. केल्विन माइनस 1 हो गया. केजी मीटर स्क्वायर माइनस 1. ये क्या हो जाएगा? मीटर पावर 1 s माइनस 3 केल्विन माइनस 1. Are there any answers like this? kg meter 1 s minus 3 Kelvin minus 1. ऐसा कोई आंसर है? B is your answer. तो 4 का आंसर क्या हो गया बेटे? B is your answer. Let's further move ahead. The graph shows the variation of velocity with time t of an object moving in a straight line. At time t is equals to 0, the displacement of the object is 0. अच्छा जी, यहाँ पे आपकी displacement 0. What is the displacement of the object at time t is equals to 20 seconds? अच्छा 20 seconds पे आपने displacement निकालना. Okay. Do you remember? Do you humbly remember one thing? एक की पॉइंट याद है लिखवाया था. एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके इक्वल होता है? डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है. ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर दैट. कैन यू रियलाइज
you have this area here under the velocity time graph, which is also displacement. ये क्या है? ये positive displacement है. Can you calculate this? This is a triangle. Can you calculate this? 1 upon 2 into the base, that is 16, into the height, that is 3. ये क्या हो गया? 1, 8, 24 meters. This is a positive displacement of 24 meters. उसके बाद you have this further displacement. This is negative displacement. बेटा ये क्या है? Negative displacement. Can you calculate this? Half into base, that is 4, into the height, that is what? Negative 1.5. Negative 1.5. 1, 2, this comes out to be negative 3 meters. You have to calculate the total displacement at time t is equal to 20 seconds. कैसे निकालेंगे? 24 positive minus 3. This comes out to be 21 meters is your displacement at time t is equals to 20 seconds. Positive displacement में से negative minus कर दी, you get your answer as 21 meters. Okay, let's see this. A science museum designs an experiment to show the fall of a feather in a vertical glass vacuum tube. The time of fall from rest, okay, so your initial velocity is 0. In the vacuum is close to this. So this is the time of fall. What is the length of the tube? Okay. First of all, let's draw the tube structure. Somewhat like this. Let's erase the top part so that it actually looks like a tube. Your initial velocity is 0. Your time taken to fall is 0.5 seconds. Also, you are in a vacuum. बच्चे वैक्यूम में आपकी एक्सेलरेशन क्या हो जाती है? 9.81 ms minus 2. Your acceleration in a vacuum becomes 9.81 ms minus 2. You have to calculate what? You have to calculate this length L. आपने ये length L निकालनी है. How will you do that? You know acceleration is 9.81 ms minus 2. Can you calculate this length L? Yes. S is equals to ut plus half a t square. ये क्या हो जाएगा? 0 because initial velocity is 0. S is equals to half into acceleration 9.81 into time per square, that is 0.5 per square. Can you calculate this answer? 0.5 into 9.81 into 0.5 per square. This comes out to be 1.22 meters. ऐसा कोई आंसर है? A is your answer. Simple. Let's further move ahead. Two coins are projected from a horizontal table at the same initial speed. Coin Y, coin X, same initial speed पे project किए जा रहे हैं. That means the kinetic energy of coin Y at the start is equals to the kinetic energy of coin X at the start. Both these are equal. ठीक है? If you have the same velocity of coin Y, same velocity of coin X, the kinetic energy at the start for both the coins is same. Coin X is projected horizontally. That means it is following half projectile motion. Projectile motion. And coin Y is projected at an angle of 30 degrees to the horizontal. That means it is following projectile motion. Okay. Both coins hit the horizontal ground without bouncing. Okay. Assume that air resistance on each coil is negligible. Okay. So air resistance क्या है? Negligible है. ठीक है. Which statement about the motion of the coins is correct? कौन सा statement about the motion of the coin is correct? Okay. Both the coins hit the ground with the same speed. I think the correct answer is barely in front of us. Why do I say that? बेटा देखो काइनेटिक एनर्जी दोनों की स्टार्टिंग में सेम है. According to law of conservation of energy, energy remains constant. Total energy remains constant. Law of conservation of energy के मुताबिक total energy remains conserved. अगर आपकी स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है तो एंडिंग पे भी यू विल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी बिकॉज एनर्जी remains conserved. It cannot be destroyed or created. अगर स्टार्टिंग में लेट से इसकी काइनेटिक एनर्जी 10 जूल्स है, इसकी काइनेटिक एनर्जी 10 जूल्स है, तो एंडिंग में भी both of them will also have the 10 joules of kinetic energy. Why? Because total energy remains conserved. Okay.
Chalo. A is your answer. Easy. Two spheres are released from rest above the ground. Okay. Both spheres reach terminal velocity. ठीक है, दोनों spheres क्या कर रहे हैं, terminal velocity को reach कर रहे हैं. बेटा, do you remember terminal velocity क्या हुआ करती थी? At terminal velocity, your up forces become equal to the down forces. Your resultant force equals to zero. This is your terminal velocity. If your resultant force equals to zero, your acceleration becomes zero. You reach a constant velocity. One sphere has a larger density than the other sphere. Okay. Both spheres have equal volumes. Okay. Which statement is correct while both the spheres are at the terminal velocity? The drag force on both the spheres is equal. No. बेटा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उस पर ड्रैग फोर्स ज्यादा होगी. The resultant force on both the spheres is equal. Yes. Because both the spheres are falling with terminal velocity, दोनों पे resultant force क्या हो जाएगी, zero. Hence the resultant force on both the spheres is equal. B is your answer. आगे बढ़ते हैं. Which statement define force? When a force acts on a body that is free to move, the force is the product of mass and acceleration. Nope. When a force acts on a body that is free to move, the force is the rate of change of momentum. B is your correct answer. Simple. Four forces are in the same plane. Act on an object. अच्छा जी, upward 12 है, downward 12 है, left पे 20 है, right पे 20 है. What could describe the motion of the object? क्या चीज motion of the object को describe कर सकती है? Is the object accelerating? No. Completely not. Object accelerate क्यों नहीं कर रहा? Right वाली forces are equal to the left वाली forces. Up वाली forces are equal to the down वाली forces. Resultant force is zero. Object की acceleration is zero. Object is not accelerating. ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज कर रही है? नो. ऑब्जेक्ट का मोमेंटम इंक्रीज कर रहा है? नो. बिकॉज व्हेन द ऑब्जेक्ट हैज अ एक्सेलरेशन ऑफ जीरो, इट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड. कौन सा आंसर आ जाएगा? इट इज मूविंग इन a straight line. B is your answer. Okay, so let's read this question. A nucleus collides with a stationary nucleus in a vacuum. The diagram shows the path of the nuclei before and after collision. No particles are involved in the collision. ठीक है, no other particles are involved in the collision. There are only two particles that are involved. Which diagram is not possible? Okay. So, if I want to draw the situation before collision बेटा कुछ इस तरह से. एक न्यूक्लियस जो है स्टेशनरी है ऐसे, इसको आके एक दूसरा न्यूक्लियस that is moving with the velocity hits. This is the scenario of before collision. Okay. So you can say this is the before collision wala scenario ka vector. This is the before collision wala scenario ka vector. This is before collision. This is before collision. And this is after collision. Both particles have certain amount of speed. This is after collision. Both particles have certain amount of speed. This is after collision. Both particles have certain amount of speed. This is after collision. Both particles have certain amount of speed. Now, which diagram is not possible? Let's analyze each one of them. We will have to analyze each one of them in detail. So let's copy it and place it here. Okay, so this was your option A. Let me grab a perfect snapshot of this. Is a thoda sa thought provoking question, so please listen carefully. Okay, so this is your option A. Can this be a possible diagram? Let's see. Beta, we know principle of conservation of momentum. Principle of conservation of momentum क्या कहता है? Total momentum before collision should be equal to the total momentum after collision. Okay. So let's first of all apply principle of conservation of momentum in the vertical direction. सबसे पहले apply करते हैं principle of conservation of momentum in the vertical direction. Can you see before collision आपकी सारी की सारी velocity horizontal direction में? Can you see before collision all your velocity is in the horizontal direction, hence momentum before collision in the vertical direction is zero. Hence, this
गारंटी इसके मोमेंटम आफ्टर कोलिजन भी जीरो होना चाहिए। बेटा देखो क्या हो रहा है, बिफोर कोलिजन वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, दैट मीन्स बिफोर कोलिजन आपका मोमेंटम इन द वर्टिकल डायरेक्शन शुड बी जीरो। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर बिफोर कोलिजन आपका वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम जीरो है तो आफ्टर कोलिजन भी वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम जीरो होना चाहिए। ओके, दिस मच इज अंडरस्टैंडेबल। अब आफ्टर कोलिजन अगर आप चाहते हो कि मोमेंटम जीरो हो तो व्हाट शुड हैपन, वन ऑब्जेक्ट या वन न्यूक्लियर, इफ यू वांट द आफ्टर कोलिजन momentum to be zero, what should happen? One nuclei should have an upward momentum. एक न्यूक्लियाई का मोमेंटम क्या होना चाहिए? अपवर्ड। एंड one nuclei should have a downward momentum. बेटा अगर आप चाहते हो कि आपका आफ्टर कोलिजन वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम जीरो हो जाए, then one nuclei should have an upward momentum, one nuclei should have a downward momentum, both will cancel out each other. तो आपका आफ्टर कोलिजन वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम जीरो हो जाएगा। लेट्स सी वेदर डू वी हैव इट ऑन ए और नॉट। ए में अगर आप इस वेक्टर को एनालाइज करो, दिस वाला वेक्टर, दिस कैन बी रिजॉल्व्ड लाइक दिस। यू हैव अ अपवर्ड मोमेंटम का वेक्टर, या दैट्स करेक्ट। डू यू हैव अ डाउनवर्ड मोमेंटम का वेक्टर? या लेट्स रिजॉल्व दिस, this gets resolved like this. You have a downward momentum ka vector as well. Both of them will cancel out. Hence, your momentum after collision will be zero. Simple. ठीक है, ये ऑप्शन तो ठीक है. This option can be a possibility. We have to state what is not a possibility. चलो B को analyze करते हैं. Let's analyze B. If you analyze B, अगर आप B को थोड़ा सा एनालाइज करो तो बी में डू वी हैव एन अपवर्ड मोमेंटम का वेक्टर? आफ्टर कोलिजन क्या हमारे पास एक अपवर्ड मोमेंटम का वेक्टर है? इफ आई रिजॉल्व दिस वेक्टर, दिस विल बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस विल बी द वर्टिकल कंपोनेंट। या यू हैव एन अपवर्ड मोमेंटम का वेक्टर। डू यू हैव अ डाउनवर्ड मोमेंटम का वेक्टर? या इफ यू रिजॉल्व दिस वेक्टर लाइक दिस, लाइक दिस, आपके पास डाउनवर्ड मोमेंटम का वेक्टर भी है। बोथ विल कैंसिल आउट ईच अदर। Momentum in the vertical direction after collision can become zero. Yeah, this is also a possibility. B भी एक possibility हो सकता है। हमने निकालने कौन सी possibility नहीं हो सकती। Now please analyze option C very very carefully. ऑप्शन सी को बहुत केयरफुली एनालाइज करना, तुम्हारी फिजिक्स इंप्रूव होने वाली है। इफ यू एनालाइज हेयर, यहाँ पे ये वाला वेक्टर has a downward momentum का component. Yeah, that's correct. What about the pink wala vector? The pink wala vector also has a downward momentum ka component. There is no upward momentum ka component to balance this out. Hence, the momentum after collision in the vertical direction is not equal to zero. This cannot be possible according to principle of conservation of momentum. C is your answer. Let's further move ahead. Let's zoom in. Okay. नॉन यूनिफॉर्म बार, नॉन यूनिफॉर्म बार का मतलब क्या होता है? वेट डजेंट एक्ट इन मिडल, weight doesn't act in middle. This is what we mean by non-uniform bar. Has a length of 50 centimeter, a weight of 200 newton. We honestly don't know where the weight will act, so let's mark it here, 200 newton at a distance of x from point B. Okay. A block of weight 400 न्यूटन is attached to the top of the bar at its center. ठीक है जी, ये 400 न्यूटन का बार है या ब्लॉक है, दैट इज अटैच्ड एट अ मिडल पॉइंट। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ओके,
The bar rests on horizontal ground. A vertical force of 360 Newton is now exerted upward on the bar at end Q and is just sufficient enough to lift it from the ground. Okay. What is the distance x? You have to calculate the distance x from the center of gravity of the bar to end P. अच्छा जी, आपने निकालना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर पॉइंट पी तक का डिस्टेंस क्या है. बेसिकली यू हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ एक्स. सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सा पॉइंट होता है जहां पे आपका पूरा का पूरा वेट एक्ट कर रहा हो. लेट्स फाइंड आउट दिस आंसर. हाउ विल यू डू दैट? क्या करोगे आप? यू विल से द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स. ओके. Which force is causing an anti-clockwise movement? This 360 Newton wali force. What will be the anti-clockwise movement here? 360 into the distance, that is 50. I am not converting the distances into meter. Why? Because I can take all the distances in centimeter. अगर आप सारे के सारे distances को centimeters में ले लेते हो, आपको conversion करने की जरूरत नहीं है. हमेशा याद रखना, अगर आप मोमेंट्स निकाल रहे हो और आप सारे के सारे डिस्टेंसेस ही सेंटीमीटर्स में ले लेते हो तो आपको कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है इन मीटर्स. ओके. सो व्हाट विल योर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बिकम? कैलकुलेट करो. 360 इंटू 50. दिस आंसर कम्स आउट टू बी व्हाट? 18,000 न्यूटन सेंटीमीटर. ठीक है. अब आपने क्लॉकवाइज मोमेंट निकालने. हाउ विल यू डू दैट? दिस 400 न्यूटन की फोर्स multiplied by the distance of 25. What will this come out to be? 400 into 25. This comes out to be what? 10,000 Newton centimeter. Now let's calculate the clockwise moment due to this 200 Newton ki force. Clockwise is equal to 200 into x. Can you equate both these moments? Yes, sum of anti-clockwise moment, that is 18,000, is equal to the sum of clockwise, that is 10,000 plus 200x. 18,000 minus 10,000 क्या हो जाएगा? 18,000 minus 10,000, this comes out to be 8,000 is equal to 200x. Divide कर दो. 8,000 divided by 200 is equal to your value of x. What does your value of x comes out to be? Value of x comes out to be 40 centimeter. This is equal to 0.4 meters. D is your answer. आ गई बात समझ? 12 का आंसर कम्स आउट टू बी डी. What is the definition of density? Density की क्या definition है? Mass per unit volume. D is your answer. Simple. A block is in equilibrium on a slope. What a beautiful question. Which vector triangle represents the three forces acting on the block? देखो, vector triangle में हमेशा पता है क्या होता है? Let me tell you how a vector triangle is drawn. Vector triangle में हमेशा the head of one vector points towards the tail of another. Head of one vector points towards the tail of another. इस तरह कहते हैं vector triangle को. This is a vector triangle. एक और तरह का हमने ट्रायंगल पढ़ा था. डू यू रिमेम्बर? रिजल्टेंट फोर्स वाला. ना रिजल्टेंट फोर्स वाले ट्रायंगल में क्या हुआ करता था सर? उसमें ऐसा होता था कि the head of the resultant vector points towards the head of the vector, and the tail of the resultant vector points towards the tail of the other vector. तो रिजल्टेंट वेक्टर में हेड हेड कोलाइड किया करते थे. वेक्टर ट्रायंगल में कभी भी हेड और हेड कोलाइड नहीं करते. द हेड ऑफ वन वेक्टर इज कनेक्टेड विद द टेल ऑफ अनदर वेक्टर. द हेड ऑफ वन वेक्टर इज कनेक्टेड टू द टेल ऑफ अनदर वेक्टर. द हेड ऑफ वन वेक्टर इज कनेक्टेड टू द टेल ऑफ अनदर. वेक्टर ट्रायंगल में वो चल रही होती है, क्या कहते हैं, सिमेट्री कह सकते हो, या हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, उस तरह चलता होता है. तो यहाँ पे ऑप्शन ए देखो, दिस हेड कोइंसाइड्स विद दिस हेड, ये तो नहीं हो सकता. दिस इज नॉट पॉसिबल. बी को देखो. बी में कैन यू रियलाइज दिस हेड इज कोलाइडिंग विद दिस हेड, ये भी नहीं हो सकता. सी को देखो. सी में ये हेड कनेक्टेड है टेल से, ये हेड कनेक्टेड है टेल से, ये हेड कनेक्टेड है टेल से. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. वेक्टर ट्रायंगल में हमेशा तीनों वेक्टर्स के हेड टेल आपस में कनेक्टेड होते हैं. रिजल्टेंट वेक्टर वाले ट्रायंगल में क्या होता है बेटा? दो हेड्स कोइंसाइड कर रहे होते हैं और दो टेल्स कोइंसाइड कर रहे होते हैं, एज यू कैन सी हियर.
और हमेशा जब भी आप इक्विलिब्रियम में होगे, यू कैन राइट अ की पॉइंट हियर, वेन एवर यू आर इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑलवेज रिजल्ट्स इन अ वेक्टर ट्रायंगल। हमेशा जब भी इक्विलिब्रियम पे होगे वेक्टर ट्रायंगल बनाओगे, रिजल्टेंट वेक्टर वाला ग्राफ नहीं बनाओगे या ट्रायंगल नहीं बनाओगे। A measuring cylinder contains 80 cm cube of liquid. The pressure due to the liquid at the 60 cm cube mark is 1200 पास्कल। ठीक है, अच्छा जी, देखो कह क्या रहा है एग्जाम। लेट्स से दिस इज अ मेजरिंग सिलेंडर, या दिस इज अ मेजरिंग सिलेंडर। इसको ऊपर से हम थोड़ा सा शेप ऑफ कर देते हैं। द मेजरिंग सिलेंडर इज फिल्ड टिल 80 cm क्यूब। एग्जामिनर कह रहा है 60 cm क्यूब वाले मार्क पे, एग्जामिनर कह रहा है एट द 60 cm क्यूब मार्क यू हैव अ प्रेशर ऑफ 1200 पास्कल। मतलब जब आपके लिक्विड 20 cm क्यूब है, मतलब 80 से 60 जा रहे हो, ऑब्वियसली 20 cm क्यूब है, राइट? तो 60 cm क्यूब वाले मार्क पे आपको प्रेशर कितना महसूस हो रहा है? 1200 पास्कल। You have to calculate the pressure at the base of the measuring cylinder. You have to calculate the pressure at the base here. How will you do that? आपको ये पता है कि 20 cm क्यूब का वॉल्यूम इज कॉजिंग 1200 पास्कल्स का प्रेशर। हाउ डू यू नो दैट? क्योंकि 60 cm क्यूब पे आपको 1200 पास्कल का प्रेशर महसूस हो रहा है। 80 से 60 जा रहे हो तो बेसिकली कितना लिक्विड है आपके पास? 20 cm क्यूब। So if 20 cm cube of liquid is causing a pressure of 1200 Pascal, 80 cm cube of liquid कितना प्रेशर कॉज करेगा? रेशियो मेथड लगाओ भाई, 80 into 1200 divided by 20, this comes out to be 4800 Pascal as your pressure. Four identical uniform blocks are spread on a table. Okay, each block has a mass of m and a thickness of h. The acceleration of free fall is g. How much work is done on the blocks in stacking them from top on one another? अच्छा जी, हमें अगर इनको stack करना है on top of one another, what will be the work done? First of all, let's consider this block. इस ब्लॉक को कंसिडर करते हैं। बेटा इस ब्लॉक को अगर मैंने ऊपर उठा के यहाँ पे रखना है लाइक दिस, what will be the work done? The mass of this block is m. G is the gravitational field distance. How much height is this block gaining? G. तो अगर ये ब्लू वाले ब्लॉक को मैंने ऊपर उठा के रखना है, दिस हैज अ फोर्स और अ वेट ऑफ एम जी, इट इज गेनिंग अ हाइट ऑफ एच। इसका वर्क डन क्या हो गया? एम जी एच। अब देखो इस येलो वाले ब्लॉक पे, इस येलो वाले ब्लॉक का भी वेट क्या है? एम जी। इस येलो वाले ब्लॉक को अगर आप ऊपर उठा के यहाँ पे रख रहे हो, हाउ मच हाइट इज दिस गेनिंग? 2h। तो इसका वर्क डन क्या हो जाएगा? एम जी इंटू 2h, दैट इज 2 mgh। ठीक है, वेट क्या था? एम जी। हाइट कितनी गेन कर रहे हो? 2h। द टोटल वर्क डन टर्न्स आउट टू बी 2 mgh। नाउ कम टू द लास्ट ब्लॉक। लास्ट ब्लॉक पे कौन सा कलर करें? अच्छा सा कोई करते हैं। लेट्स यूज दिस। ओके, दिस ब्लॉक हैज अ मास ऑफ व्हाट? m। वेट क्या हो जाएगा? mg। नाउ इफ यू टेक दिस ब्लॉक, प्लेस इट हियर, आपका टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा? हाइट कितनी गेन कर रहे हो आप? व्हाट इज द हाइट दैट यू हैव गेन? 3h। तो क्या हो जाएगा टोटल? 3 mgh। टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? mgh प्लस 2 mgh प्लस 3 mgh। टोटल वर्क डन क्या हो गया? 6 mgh। फर्स्ट वाले ब्लॉक को उठा के ऊपर रखने के लिए कितना वर्क डन लग रहा है? mgh। सेकेंड वाले ब्लॉक को ऊपर उठाने के लिए और रखने के लिए कितना वर्क डन लग रहा है? 2 mgh, बिकॉज यू आर गेनिंग अ हाइट ऑफ 2h। थर्ड वाले सेकंड वाले ब्लॉक की बात कर रहा था अभी। सेकंड वाले ब्लॉक को उठा के ऊपर रखने के लिए कितना वर्क डन लग रहा है, या कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही है? 2 mgh।
थर्ड वाले ब्लॉक को ऊपर उठा के रखने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है या कितनी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही है? 3 mgh, बिकॉज यू आर गेनिंग अ हाइट ऑफ 3h। वेट आपका mg है। द आंसर कम्स आउट टू बी 3 mgh हियर। सबको प्लस कर दो, टोटल आंसर है 6 mgh। ओके। एन इलेक्ट्रिक मोटर, oh, now we have a multicolor. A electric motor uses power of 1.7 kilowatts when operating normally. The efficiency is 53%. What is the useful power output? अच्छा जी, efficiency क्या है बेटा? 53%। इसको अगर पॉइंट्स में लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? 0.53। Efficiency is equals to the power output divided by the power input. Efficiency क्या है? 0.53। पावर आउटपुट आपने निकालनी है। पावर इनपुट क्या है बेटे? 1.7 इंटू 10⁻³ पावर आउटपुट निकालो, क्या आ जाता है? 0.53 इंटू 1.7 10⁻³ व्हाट डज योर आंसर कम्स आउट टू बी? हाँ जी, 0.53 इंटू 1.7 इंटू 10⁻³ आपका आंसर आ गया 901 वोट्स। और 901 वोट्स को अगर मैं किलो वोट्स में कन्वर्ट करूं तो दिस विल बी 0.9 किलो वोट्स। बी इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं जी। A ball is released from rest, मतलब initial velocity is zero, initial kinetic energy is zero, and falls vertically to the ground. The kinetic energy of the ball varies as the height of the ball above the ground changes. Air resistance is negligible. Which graph shows the variation with kinetic energy with height? बेटा देखो, जब आपकी बॉल मैक्सिमम हाइट पे होगी ना, मैक्सिमम हाइट पे होगी, तब आपकी बॉल रेस्ट पे है, काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। सो एट द मैक्सिमम हाइट योर काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। डू वी हैव एनी ऑप्शन लाइक दैट? सी और डी में से कोई हो सकता है। मैक्सिमम हाइट पे आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? जीरो जीरो। एट द लोएस्ट पॉइंट, एट द ग्राउंड, जब आपकी हाइट जीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। बोथ सी एंड डी आर डिपिक्टिंग दैट। बेटा सी और डी दोनों ऑप्शंस वो डिपिक्ट कर रहे हैं। अब हमने सोचना है ग्राफ क्या कर्व बनेगा या लाइन बनेगी। सो फॉर दैट यू विल से एज द बॉल moves downward, what happens? The gain in kinetic energy is equals to loss in gravitational potential energy. गेन इन काइनेटिक एनर्जी को आप ऐसे ही रहने दो। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी को किस तरह लिखोगे? mg एंड अ नेगेटिव हेयर। नेगेटिव क्यों लगा दिया बेटा? बिकॉज यू हैव लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। Now, can you realize if you plot kinetic energy on the y-axis, h on the x-axis, this is a straight line graph with a negative gradient. Gradient आपका नेगेटिव है और स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। D is your answer. Let's further move ahead. An object traveling with a speed of 10 meters per second has a kinetic energy of this 1 upon 2 m v क्या है? 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1500। मास क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 2 m इंटू 100 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1500। 100 डिवाइडेड बाई 2, 50 m इज इक्वल टू 1500। m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1500 डिवाइडेड बाई 50, m comes out to be 30 kg. आपका मास क्या आ गया? 30 kg. Now you are traveling at a speed of 40. You have to calculate new kinetic energy. Kinetic energy new is equals to half into m, that is 30. Velocity क्या है? 40 का square. Can you calculate this? 40 का square into 30 divided by 2, 24,000 joules is your answer. सी बेटे आपका आंसर हो गया। सिंपल, इजी पीजी, लेमन स्क्वीजी, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड हियर। ठीक है, 19 का आंसर क्या हो गया भाई? सी। यू कैन चेक इट इन द मार्किंग स्कीम एज वेल। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड यंग्स मॉड्यूलस? स्ट्रेन के तो कोई यूनिट्स नहीं होते, स्ट्रेस के यूनिट्स होते हैं पास्कल्स, यंग्स मॉड्यूलस के यूनिट्स होते हैं पास्कल्स। डी इज योर आंसर। This is a force versus extension graph. Which quantity is represented by the area under the graph? Always remember, area under the graph of force versus extension क्या represent करता है? Elastic potential energy या work done on the wire. Both are interchangeable words. A wire of length L naught is attached to one end of a fixed point. Okay. A tensile force is applied to the other end so that the wire extends and has a new length of L1.
ठीक है, आप एक्सटेंशन किस तरह निकालोगे, न्यू लेंथ L1 माइनस द ओरिजिनल लेंथ L0। व्हाट इज द स्ट्रेन, स्ट्रेन हमने निकालना है, स्ट्रेन किसके इक्वल होता है भाई, एक्सटेंशन ओवर ओरिजिनल लेंथ। एक्सटेंशन क्या है, L1 माइनस L0। ओरिजिनल लेंथ क्या है बेटा, L0। अब क्या करेंगे, लेट्स रीअरेंज दिस फ्रैक्शन। L1 डिवाइडेड बाय L0 माइनस L0 डिवाइडेड बाय L0, कैंसिल कैंसिल। L1 डिवाइडेड बाय L0 माइनस 1, ऐसा कोई आंसर है, A इज योर आंसर। Let's further move ahead. A wire of length L is stretched to determine its limit of proportionality. The graph shows the variation of extension with force. Okay. The limit of proportionality is point P. The same experiment is repeated with another wire of length 2L but with the same material, same diameter as the first wire. Which point on the graph shows the limit of proportionality for the new wire? Okay. So बेटा हमने क्या पढ़ा है, Young's modulus is equals to FL over AE. If you realize F over E can be replaced by what? Young's modulus. तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो, E is equals to KL over A. Let's make K the subject. E into A divided by length is equals to K. Okay. अब हम वर्किंग करते हैं ओरिजिनल वायर के लिए। For the original wire, what was your Young's modulus E? What was your area A? What was your length L? Now for the new wire, इसको ना हम एक काम करते हैं, आई थिंक इट वुड बी बेटर अगर हम इसको छोटा करके यहाँ पे रख दें और ओरिजिनल वायर और न्यू वायर की वर्किंग यहाँ पे कर दें। हाँ, दिस विल बी मोर प्रेजेंटेबल ना। ओरिजिनल वायर यहाँ पे आ गया, न्यू वायर यहाँ पे आ गया। ओके, व्हाट इज द spring constant of the original wire? K is equals to EA divided by L. For the new wire, you have the same material, Young's modulus सेम रहेगा, सेम डायमीटर, एरिया सेम रहेगा, लेंथ क्या है, 2L हो गई है। कैन यू नाउ कैलकुलेट K ऑफ द न्यू वायर? यस, K ऑफ द न्यू वायर क्या हो जाएगा, EA डिवाइडेड बाय 2L। बेटा न्यू वायर का के क्या हो गया है, ई ए डिवाइडेड बाई एल। कैन यू रियलाइज ई ए डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू द के ऑफ द ओरिजिनल वायर। ये आप तो यहाँ पे प्लेस इन कर दो, के ऑफ द न्यू वायर इज इक्वल टू व्हाट, इसकी इन सारों की जगह ओरिजिनल वायर का के आ जाएगा, ओरिजिनल वायर का के डिवाइडेड बाई 2। द न्यू वायर का स्प्रिंग कांस्टेंट इज हाफ ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द ओरिजिनल वायर। तो इफ योर स्प्रिंग कांस्टेंट हैज डिक्रीज्ड, देखो न्यू वायर का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, हाफ ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द ओरिजिनल वायर, योर स्प्रिंग कांस्टेंट हैज डिक्रीज्ड। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट डिक्रीज हुआ है या हाफ हो गया है, व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब ये होता है कि सेम अमाउंट ऑफ फोर्स पे यू विल बी गेटिंग डबल द एक्सटेंशन। पहले अगर एक्सटेंशन x हो रही थी तो अब सेम अमाउंट ऑफ फोर्स पे एक्सटेंशन आपकी क्या हो रही होगी, 2x। डी इज योर आंसर। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट हाफ होने का मतलब क्या हो गया, स्प्रिंग इजीली स्ट्रेचेबल हो गया, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स पे आपकी एक्सटेंशन डबल हो जाएगी, योर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी टर्न्स आउट टू बी डी। The graph shows the variation with distance along the wave of the displacement of water particles at a particular instance in time for a transverse water wave. Okay. PQR shows the portion of three water particles in the wave, which particle has the greatest speed at the instance. Greatest speed कहाँ पे होती है, at the mean position। बेटा greatest speed कहाँ पे होती है, mean position पे। mean position कहाँ है, at point R। point R पे you have the greatest speed, D is your answer। Which phenomena is only associated with transverse wave polarization? ये तो बहुत इजी सवाल थे, कुछ सवाल एग्जामिनर देता है पास करने के लिए। ओके, a wave is displayed on an oscilloscope. The oscilloscope settings are, टाइम बेस सेटिंग क्या है, 30 माइक्रोसेकंड्स पर डिवीजन। इसका मतलब क्या है कि पर डिवीजन आपका टाइम कितना कवर हो रहा है, 30 माइक्रोसेकंड। ओके, द वाई गेन इज दिस, यू हैव टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है, 1 ओवर टाइम पीरियड। लेट्स कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी समहाउ, किसी तरह फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, चलो देखते हैं। अब मसला ये है कि ये ग्राफ या ये ट्रेस थोड़ा सा अजीब है।
वाई इज दिस ट्रेस या ग्राफ थोड़ा सा अजीब? ये ग्राफ या फिर ये ट्रेस थोड़ा सा अजीब क्यों है? बिकॉज वी डोंट हैव वेरी क्लियर वैल्यूज, आराम से रीडेबल वैल्यूज नहीं है. So let's do one thing. Let's start from this point. From this point to this point, one wave gets covered. Then from this point to this point, two waves get covered. दो waves cover हो रही हैं. Let's count the number of boxes that takes to complete two waves. ये one box हो गया, two box हो गया, three box, four box, five box, six box. And can you realize this and this remaining region create one box in total? तो seven boxes हो गए. सेवन बॉक्सेस में आपकी दो वेव्स कंप्लीट हो रही हैं बेटा. एक वेव कितने बॉक्सेस में कंप्लीट होगी ऑन द एक्स एक्सिस? 3.5 रेशियो मेथड. हमें पता है एक बॉक्स ऑन द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स 30 माइक्रोसेकंड. वन बॉक्स ऑन द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स 30 माइक्रोसेकंड्स. 3.5 बॉक्सेस कितने माइक्रोसेकंड्स को रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स, कैन यू कैलकुलेट दिस? 3.5 into 300, x comes out to be 1050 microseconds. ये क्या आ गया आपका टाइम पीरियड? Once you have the time period, can you calculate the frequency? Easy peasy, lemon squeezy. 1 divided by 1050, 10 raised to the power of minus 6. निकालो बेटा frequency क्या आती है? 1 divided by 1050, 10 raised to the power of minus 6. Frequency comes out to be 952 hertz. B is your answer. Let's further move ahead. An electromagnetic wave traveling in free space is not visible to the human eye. हमेशा याद रखो, ह्यूमन आई को जो वेवलेंथ विजिबल होती हैं वो 400 से लेकर 700 नैनोमीटर होती हैं. Now which one is not visible to the human eye? A is visible. Why? Because A में क्या है? 4.5 into 10 raised to the power of minus 10 kilometer. Kilometer will get, kilometer means that this entire value will get multiplied by 10 raised to the power of 3. This becomes what? 4.5 into 10 raised to the power of minus 7 meters. इसको एक डेसिमल प्लेस, दो डेसिमल प्लेस आगे ले जाओ. 450 10 raised to the power of minus 9 meters. This is what? Nano. 450 nanometer तो visible होगी because human eye can see within the range of 400 nanometer to 700 nanometer. तो ये तो visible होगी, ये भी इसी तरह visible होगी. However, if you analyze option C, 5.4 into 10 raised to the power of minus 6 centimeter. सेंटी का मतलब क्या है? You will multiply with what? 10 raised to the power of minus 2. What will your answer come out to be? 5.4 into 10 raised to the power of minus 8 meters. Take this one place forward, two place forward. 540 10 raised to the power of minus 10 meters. या फिर अगर इसको इस तरह नहीं लिखना चाह रहे, you can further write it like this. If you take this one decimal place forward, ये क्या हो जाएगा? 54 into 10 raised to the power of minus 9 meter. 10 raised to the power of minus 9 क्या होगा? Nano. 54 nanometer. This is not visible to human eye. C is your answer. Okay, so let's see this question. Electromagnetic waves of equal wavelengths are emitted from two sources, X and Y. The waves are emitted from X and Y with a phase difference of 180 degree. अच्छा जी, X और Y के बीच में phase difference क्या है बेटा? 180 डिग्री. अब क्या आपको याद है मैथमेटिक्स से कि 180 डिग्री कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पाई रेडियंस? ठीक है. और पाई रेडियंस कितने वेवलेंथ के इक्वल होता है? लैम्डा ओवर 2. हमेशा ये बात याद रखना कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस एंड वन वेवलेंथ इज इक्वल टू 2 पाई डिग्री का एंगल. तो पाई रेडियंस कितने वेवलेंथ के इक्वल होंगे? लैम्डा ओवर 2. ठीक है, ये बात हमेशा हमेशा याद रखना. नाउ यहाँ पे इनिशियली बोथ द सोर्सेज एक्स एंड वाई आर एट अ difference of lambda over 2. Okay. A detector moves along a path that is parallel to the line xy, okay, and detects a patterns of intensity maxima and minima. The diagram shows the arrangement of the sources and the path of the detector.
इंटेंसिटी मैक्सिमा इज डिटेक्टेड एट पॉइंट जेड। अच्छा जी, इंटेंसिटी मैक्सिमा डिटेक्ट हो रही है एट पॉइंट जेड। लेंथ एक्स जेड इज 70 सेंटीमीटर, लेंथ वाई जेड इज 110 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पॉसिबल वेवलेंथ ऑफ वेव्स? बेटा देखो, आप इंटेंसिटी मैक्सिमा डिटेक्ट कर रहे हो एट पॉइंट जेड। मुझे जरा सा बताओगे इंटेंसिटी मैक्सिमा कब आता था? इंटेंसिटी मैक्सिमा कब आता था? व्हेन यू यूज्ड टू हैव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मैंने पार्ट डिफरेंस बताए थे, कौन कौन से होते हैं? बिल्कुल, नोट्स में चले जाओ। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस कौन कौन से हुआ करते थे? 0 लैंडा, 1 लैंडा, 2 लैंडा, 3 लैंडा, 4 लैंडा। ओके, अब यहाँ पे एक मसला है। योर वेव्स आर ऑलरेडी हैविंग अ पार्ट डिफरेंस ऑफ लैंडा ओवर टू, तो सब पार्ट डिफरेंस में लैंडा ओवर टू कर दो। अब आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पार्ट डिफरेंसेस क्या होंगे? लैंडा ओवर टू, 3 लैंडा ओवर टू, 5 लैंडा ओवर टू, 7 लैंडा ओवर टू। सर आपने ऐसा क्यों किया? बिकॉज बेटा आपकी जो वेव्स है ना, स्टार्टिंग पॉइंट से ही लैंडा ओवर टू का फेज डिफरेंस कैरी करके आ रही हैं। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के जो भी पार्ट डिफरेंस है उनमें लैंडा ओवर टू, लैंडा ओवर टू, लैंडा ओवर टू ऐड कर। आप पार्ट डिफरेंस किस तरह से निकालेंगे सर? कैन यू रियलाइज दिस इज 110 सेंटीमीटर, दिस इज 70 सेंटीमीटर, दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? 110 माइनस 70 इज इक्वल टू 40, इज इक्वल टू लैंडा ओवर टू 3, लैंडा ओवर टू 5, लैंडा ओवर टू 7, लैंडा ओवर टू। अब हम क्या करेंगे? हमने तो वेवलेंथ निकालनी थी। हाउ विल वी कैलकुलेट वेवलेंथ? बारी बारी इक्वेट करते जाओ। 40 को पहले इक्वेट करो लैंडा ओवर टू से। 40 इज इक्वल टू लैंडा ओवर टू, वेवलेंथ क्या हो जाएगी? 80 सेंटीमीटर। डू यू हैव एन ऑप्शन लाइक दैट? नो, कैंसिल दिस आउट। अब 40 को इक्वेट करो 3 लैंडा ओवर टू से। 3 लैंडा ओवर टू, लैंडा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 80/3 इज इक्वल टू योर लैंडा। निकालो ये क्या आता है? 80/3, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट? 26.6 सेंटीमीटर। ऐसा भी आंसर नहीं। अब 40 को इक्वेट करो 5 लैंडा ओवर टू से। 40 इज इक्वल टू 5/2 लैंडा। क्या आ जाएगा आंसर? 40 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, this comes out to be 16, lambda comes out to be 16 सेंटीमीटर। ऐसा आंसर है, बी इज योर आंसर। टू वेवलेंथ, ओके, सो टू वेव्स ऑफ, अच्छा ये प्रीवियस वाला मैं वापस भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिकॉज थोड़े से स्टूडेंट्स ना इसमें कच्चे होते हैं इस वाले सवाल। देखो बेसिकली व्हाट डू यू हैव टू वेव्स x and y that are at a distance of 180 degrees apart, that have a phase difference of 180 degree। फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री कितने वेवलेंथ के इक्वल होता है? लैंडा ओवर टू। अब पॉइंट जेड पे आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। पॉइंट जेड पे क्या हो रही है बच्चे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? कि आपकी लैंडा वैल्यूज क्या हो जाएंगी? व्हाट विल बी योर लैंडा वैल्यूज? लैंडा वैल्यूज विल बी इक्वल टू व्हाट? लैंडा वैल्यूज विल बी इक्वल टू 0 लैंडा, 1 लैंडा, 2 लैंडा, 3 लैंडा, 4 लैंडा। ये आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की लैंडा वैल्यूज होती हैं यूजुअली। बट सिंस यू हैव अ पार्ट डिफरेंस ऑफ लैंडा ओवर टू, या लैंडा ओवर टू हर पार्ट डिफरेंस में ऐड कर दो। पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा? 110 माइनस 70 इज इक्वल टू 40। 40 को इक्वेट करते जाओ, पहले लैंडा ओवर टू से, फिर 3 लैंडा ओवर टू से, फिर 5 लैंडा ओवर टू से। यू कैलकुलेट द वेवलेंथ। जब 40 को आपने लैंडा ओवर टू से इक्वेट किया, आपका आंसर 80 सेंटीमीटर आया, दैट इज नॉट एन ऑप्शन। फिर 40 को आपने 3 लैंडा ओवर टू से इक्वेट किया, आपका आंसर 26.6 आया, दैट इज ऑल्सो नॉट एन ऑप्शन। 40 को आपने फिर 5 लैंडा ओवर टू से इक्वेट किया, 16 सेंटीमीटर इज योर लैंडा, दैट इज एन ऑप्शन। ओके, टू waves of the same type overlap, when does the principle of superposition apply? Principle of superposition तो हमेशा अप्लाई करेगा, ठीक है? there is no exception to that. Okay, a wave, oh sorry, a ripple tank contains water at a constant depth. Okay, a water wave of constant frequency travels through a gap in a barrier placed in the ripple tank. Okay, the gap is made smaller। अच्छा, गैप को आप स्मॉल कर दो। Which diagram represents the wave before and after the barrier?
अच्छा जी, अगर आप गैप को स्मॉल कर रहे हो तो डिफ्रैक्शन की अमाउंट बढ़ जाएगी, डी विल बी योर आंसर, सिंपल। लाइट ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी फ्रॉम टू कोहेरेंट, इसको ऊपर कर दो, लाइट फ्रॉम अ सिंगल फ्रीक्वेंसी, ओके, light of a single frequency from two coherent sources interfere to produce a pattern of bright and dark fringes on the screen, which change results in a larger fringe separation. हमने क्या पढ़ा, x is equal to lambda d over a। अगर x आपने इंक्रीज करना है तो इसका मतलब आप क्या इंक्रीज करोगे? अगर आप चाहते हो कि फ्रिंज सेपरेशन x इंक्रीज हो तो आप क्या इंक्रीज करोगे? यू विल इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन। क्या आप डी की वैल्यू को इंक्रीज करोगे? जी, आप डी की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हो, ए इज योर आंसर। द करंट इन अ मेटालिक कंडक्टर इज दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन? एन क्या होते थे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, सी इज योर आंसर। विच कैन नॉट बी द चार्ज ऑन अ चार्ज कैरियर। हमेशा याद रखो, योर चार्ज on a charge carrier should be a multiple of 1.6 into 10 raised to the power of minus 19। अगर 1.6 into 10 raised to the power of minus 19 को मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री किया जाए, ये चार्ज आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई बाय माइनस टू करोगे तो ये चार्ज आ जाएगा। देर इज नो पॉसिबल मल्टीपल जिससे 1.6 10 रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस 19 को मल्टीप्लाई किया जाए, तो 2.4 आपका आंसर आ जाएगा, सी इज इनकरेक्ट। 2.4 का चार्ज कभी भी नहीं हो सकता, बिकॉज किसी भी मल्टीपल से मैं मल्टीप्लाई कर लूँ 1.6 को, you will never get 2.4 as your answer. Okay, let's see this. A steel wire has the length of this. Okay, the reading on the voltmeter is this, the reading on the ammeter is this, the resistivity is this. You have to calculate the diameter of the steel wire. How will you do that? रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? वोल्टेज ओवर करंट। वोल्टेज की वैल्यू क्या है? 1.5। करंट की वैल्यू क्या है? 4.9। रेजिस्टेंस आ गई? जी सर, बिल्कुल आ गई। 1.5 divided by 4.9, the resistance comes out to be 0.306 ohms. Okay, रेजिस्टेंस किसके इक्वल होती है? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया की वैल्यू क्या आ जाएगी? रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी क्या है? 6.9 इंटू 10 इज द पावर ऑफ माइनस 7। लेंथ क्या है? 2.2। ओके, रेजिस्टेंस हम निकाल चुके हैं 0.306। तो निकालो एरिया की वैल्यू क्या आती है भाई? एरिया की वैल्यू जरा निकाली जाए तो ये आ जाएगी 2.2.306। एरिया की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 4.96 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई डी स्क्वायर ओवर 4। क्या आप डायमीटर निकाल लोगे? यस, एरिया इंटू 4 डिवाइडेड बाय पाई अंडर रूट इज योर डायमीटर, क्यूट लिटिल डायमीटर। एरिया की वैल्यू क्या है? 4.96, 10 इज द पावर ऑफ माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय पाई टेकन अंडर रूट। ले लेते हैं भाई, बहुत मजाक हो गया है ना, बहुत मजाक हो गया। अब ए लेवल्स को सीरियसली ले लो। द डायमीटर की वैल्यू कम्स आउट टू बी 2.51, 10 इज द पावर ऑफ माइनस 3 meters. D is your answer. You can check this in the marking scheme as well. 34 का आंसर is D. Easy peasy lemon squeezy। आगे बढ़ते हैं। Two resistors of resistance R and two resistors of 3R are connected to a cell of EMF 8 volts. Okay. The cell has negligible internal resistance. What is the reading on the voltmeter? आपने voltmeter पे reading निकालनी है. How will you do that? First of all, let's calculate the voltage across this resistor R. How will you do that? The resistance of R. Total resistance क्या है इस branch में? R plus 3R, that is 4R, multiplied by the voltage, that is 8. 1 cancel, 1 2। The voltage across the resistor R, इस resistor R के across voltage क्या है? 2 volts। तो बेटा आपकी ब्रांच में इनिशियली टोटल वोल्टेज क्या थी? 8। 2 वोल्ट्स इसने कंज्यूम कर ली। इस पॉइंट पे कितनी रह जाएगी? 8 माइनस 2, दैट इज 6 वोल्ट्स। ओके, अब आ जाओ इस ब्रांच पे, द लोअर ब्रांच।
लोअर ब्रांच पे आ जाओ, ये येलो हाईलाइटेड ब्रांच पे। लेट्स कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस दिस रजिस्टर। वोल्टेज अक्रॉस द 3R रजिस्टर क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस ऑफ 3R डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 4R मल्टीप्लाइड बाय 8। आर आर कैंसिल आउट, 1 2 6 वोल्ट्स। 6 वोल्ट्स इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस 3R की रेजिस्टेंस। इस पॉइंट पे कितनी वोल्टेज बच जाएगी, द टोटल वोल्टेज अक्रॉस द ब्रांचेस 8, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। तो इस पॉइंट पे कितनी वोल्टेज बच गई, 2। इस पॉइंट पे कितनी थी, 6। वोल्ट मीटर पे रीडिंग क्या आ जाएगी, 6 माइनस 2 दैट इज 4। परफेक्ट। Okay, so the variable resistor is adjusted so that the current increases. अच्छा, variable resistor को आप adjust कर रहे हो so that the current in the circuit increases. Why does the potential difference, that is the voltage across this variable resistor, decrease? अगर आप करंट को इंक्रीज कर रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वेरिएबल रेजिस्टर डिक्रीज क्यों कर रहा है बेटा? क्योंकि अगर आप करंट को इंक्रीज करते हो तो वोल्टेज अक्रॉस दिस छोटू सा इंटरनल रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। अगर वोल्टेज अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो वोल्टेज अक्रॉस द वेरिएबल रेजिस्टर विल डिक्रीज। सिंपल। इज देयर एनी ऑप्शन लाइक दैट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर इंक्रीजेस, सी इज योर आंसर। अच्छा जी, ये क्या लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैज अ फिक्स रेजिस्टर ऑफ 20 ohms, ठीक है, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ वेरिएबल रेजिस्टर एंड अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 16 volts, negligible internal resistance, okay. The power dissipated in the electrical device is 4 volts, okay. The power dissipated in the electrical device is 4 volts, यहाँ पे 4 volts की पावर आ गई। What is the resistance of the variable resistor? Easy peasy, निकाल लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। First of all, this device has a power of 4, resistance of 20 ohms. Can you calculate the current across the circuit? जी बिल्कुल। P is equals to I square R। पावर क्या है, 4, I square ऐसे ही रहेगा, रेजिस्टेंस 20 है, 4 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर, 1/5 is equals to I square taken under root 1/5. What does your current comes out to be? Current comes out to be 0.45 ampere is your current in the circuit. सर्किट में करंट क्या है, 0.45 एम्पियर, 0.45 एम्पियर। परफेक्ट। सो दिस वेरिएबल रेजिस्टर, अब यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टर के लिए लिखते जाओ, दिस वेरिएबल रेजिस्टर will also have a current of what, 0.45 एम्पियर, ओके। अब क्या आप वोल्टेज निकाल सकते हो अक्रॉस द वेरिएबल रेजिस्टर? जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंसिडर दिस डिवाइस अगेन, पहले इस डिवाइस को वापस कंसिडर कर लेते बेटा। इफ यू कंसिडर दिस डिवाइस अगेन, क्या आप रियलाइज कर सकते हो इस डिवाइस के थ्रू पास होने वाला करंट क्या है, 0.45 एम्पियर। इस डिवाइस की रेजिस्टेंस क्या है, 20 ओम। कैन यू कैलकुलेट द वोल्टेज, आई आर करके, यस आई क्या है 0.45, रेजिस्टेंस क्या है 20। कैलकुलेट करो वोल्टेज क्या आ रहा है। Voltage comes out to be 8.9 volts. This is the voltage across this device. Voltage across variable resistor क्या होगा, 16 minus 8.9, 16 minus answer. This comes out to be 7, approximately 7.0 volts. Can you calculate the resistance now? Voltage over current, 7 divided by 0.45, बताओ रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ रही है। Resistance की value comes out to be 15.5 ohms, that is roughly equal to A, that is 16 ohms। आगे बढ़ते हैं। Whenever a beta positive particle is emitted, कौन सा पार्टिकल साथ emit होता है, न्यूट्रिनो obviously। What are the charges of anti down and anti strange quark? Anti down quark का charge होता है +1/3, anti strange का भी +1/3। Okay, let's see this। The nucleus of a radioactive isotope of an element emits an alpha particle। अच्छा जी, let's suppose this is a nucleus X, this is A the proton number, B the mass number। ठीक हो गया, ये आपका X है, ये क्या emit कर रहा है, alpha particle emit कर रहा है, okay। Once you emit an alpha particle, the mass number gets subtracted by 4, the proton number gets subtracted by 2, okay। The daughter nucleus emits a beta negative particle। अच्छा जी, इसके बाद आप बीटा नेगेटिव पार्टिकल emit करते हो, so your proton number will get added by 1, okay। This will become A minus 1।
देन यू इमिट अनदर बीटा पार्टिकल, एक और बीटा पार्टिकल इमिट करते हो, वापस से आपका प्रोटॉन नंबर ऐड 1 हो जाएगा, -1 +1 0 हो जाएगा। ये आ गया आपकी फाइनल नोटेशन। दिस इज योर फाइनल नोटेशन। मास नंबर इज B-4, प्रोटॉन नंबर इज A। इनिशियल नोटेशन क्या थी? प्रोटॉन नंबर ऑफ A, मास नंबर ऑफ B। ओके, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द फाइनल न्यूक्लियाइड। अच्छा, ये जो फाइनल न्यूक्लियाई है उसको किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? It is a different isotope of the original element. I agree. Why? Because both of them have the same proton number of A. दोनों का mass number different है. That means they are a isotope of the same element. So yeah, I think that's it for this paper. If you have any questions, you can ask in the comments.